does hijab hinder the leadership strength in philosophy? I mean, how can a woman empower others if she is made to believe that she is scared of other men? Okay, Shaista has asked this question. Shaista, अगर सवाल पूछ रहे हैं कि हिजाब से लीडरशिप का बेसिक फलसफा ही खराब हो जाता होगा, क्योंकि हो जाता है क्योंकि वो तो पहले ही बता रही है कि मैं आदमियों से इतना डरती हूँ और आदमियों के खिलाफ मैंने एक अपने ऊपर कवर लगाया हुआ है. अरमानो कि कहाँ से ये आया आपके पास ये फलसफा कि औरत हिजाब जो है वो आदमियों के लिए करती है? मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने भी पढ़ना है वो. बिकॉज अल्लाह ताला ने तो कहा था कि हिजाब का जो ऑर्डर है वो औरत को उसकी ह्यूमिलिटी के लिए कहा है, ताकि वो इस कॉस्मेटिक रेस में ना आ जाए कि मैं कैसी लग रही हूँ. ये कोर ह्यूमिलिटी एक लीडरशिप का ट्रेट है. ये अब इस वक्त कॉर्पोरेट लीडरशिप ने भी अडॉप्ट कर लिया है. वो कहते हैं सबसे पहले अथॉरिटी होनी चाहिए, फिर फेलोशिप, फिर फॉलोअरशिप, फिर नंबर 5 लीडर जो डीप लीडर्स हैं, जो प्योर लीडर्स हैं, वो ह्यूमिलिटी के ऊपर आ जाते हैं. उल्टा किया हुआ उन्होंने चक्का. देखें, अल्लाह ताला कहते हैं सबसे पहले इंसान के अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, फिर मैं उसको कोई रुतबे देता हूं. वो कहते हैं नहीं, सबसे पहले अथॉरिटी होनी चाहिए, फिर उसके फिर फेलोशिप, फिर फॉलोअरशिप हो, फिर ह्यूमिलिटी हो. लीडरशिप की सबसे ऊंची उड़ान को ह्यूमिलिटी कह रहे हैं वो. हमारे दीन ने बताया सबसे पहला कदम ह्यूमिलिटी है. आप आजिज नहीं है तो आपको कुछ नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी आपको नहीं मिलेगी. और वो कह रहे हैं नहीं, सबसे पहले आप एरोगेंट होंगे, अथॉरिटी, ठीक है, फिर फॉलोअरशिप, ठीक है. सो ह्यूमिलिटी इज ए लीडर. आर यू टेलिंग मी कि मेरा वक्त ऊपर चला गया? हो गए? ओके, आई एम सो सॉरी. सो ह्यूमिलिटी के लिए सबसे बड़ा टूल आपको मिला हुआ है हिजाब का, सो दैट आप किसी किस्म की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की कंज्यूमर ना रहें, आप अपने पर्पस पे रहें. और आपको अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट दिया हुआ कि किसी भी तरीके से आपको अपनी ना पड़ी हो कि मैं कैसी लग रही हूं. दिस इज व्हाई हिजाब वाज कमिंग इन द फिलॉसफी. अगर किसी ने आपको ये बताया नहीं है कि हिजाब किस लिए, तो आप देख लें फिर हिजाब के बगैर कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं एक खातून को अपने पर्पस को अचीव करने के लिए. ठीक है, सुबह 7 बजे उठती है वो बेचारी 9 बजे दफ्तर में जाने के लिए. एक आम बंदा उसी का काउंटर पार्ट 8:45 बजे उठ के अपने काम शुरू कर देता है 9 बजे वाले, बिकॉज शी इज इन द she has to look like she's a leader. आदमी has to act like he's a leader. तो फिर तो फर्क आएगा ही ना. So hijab actually is inside the core philosophy of leadership and is for the core of leadership. Okay? So ये जो डोपामिन की गेम्स है ना, ये केमिकल है जो पिछले सेशन में आप जरूर नीचे जाके देखिएगा. ये डोपामिन एडिक्शन करता है आपको. हिजाब आपको डोपामिन से बचा लेता है, आपके ब्रेन को बैलेंस में रखता है, क्योंकि आपको कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट इसलिए नहीं आती कि लोग कितने मुझे देख के अप्रिशिएट करें कि हाँ, शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल. लीडरशिप हैज नथिंग टू डू विद द लुक्स. व्हाई डज हिजाब हिंडर इट? इफ एनीथिंग हिजाब हैज अ लॉट टू डू विद ह्यूमिलिटी. तो लीडरशिप तो आपकी बेहतर हो जाती है. ओके, आप एक भी लीडर बता दें जो असली लीडर हो, जिसको आप जानते हैं, और वो अपनी लुक्स की वजह से मशहूर हो, या उसको फिक्र पड़ी हो कभी लुक्स की. सोचें जरा, मोहम्मद अली जिन्ना या गांधी या मदर टेरेसा या बिल्किस ईदी, फरहद हाशमी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स हियर, जिसको आप समझते हैं लीडर. नेल्सन मंडेला बहुत खूबसूरत आदमी था, मार्टिन लूथर किंग बहुत खूबसूरत आदमी था. कोई सहाबी की शक्ल आप तक पहुंची है, ठीक है, या अंबिया में से किसी की शक्ल आप तक पहुंची है, ठीक है. ये जो है ना, ये लुक्स के जो कसीदे पढ़ने हैं अपने लीडर्स के, वो लीडर्स तो है ही नहीं. So hijab does not hinder in any way. If anything, it strengthens the core philosophy that creates humility. Okay? So, this is Sammy. This is Sammy. I do not know her real name. Is it scientific for men to marry women, more women? Okay, why does that? This has nothing to do with my subject. Why are men scientifically allowed to marry more women? And is it the monogamy that is helping the Western woman to become okay? Her real question is कि एक औरत एक आदमी से शादी कर सकती है वेस्ट में सिर्फ इसलिए भी उसको पावर मिल रही है. That's a very let me answer your question very candidly. दुनिया में सिर्फ एक ही औरत है जो मोनोगमी प्रैक्टिस करी और मुसलमान औरत है. ओके, अमेरिका की या कनाडा, यूरोप की कोई औरत मोनोगमिस्ट नहीं है. देयर पॉलीगमिस्ट्स. एक औरत के काफी सारे
رشتے رہتے ہیں before she gets married. اوکے, monogamy مسلمان عورت پریکٹس کر رہی ہے. They are polygamist women. اللہ تعالیٰ نے مسلمان آدمی کو کہہ دیا کہ he can practice polygamy. اوکے, وہاں پہ عورت polygamist ہے, آدمی بھی ہے. So by practice Europe is polygamist and Muslim women is monogamist. So آپ کا میں کوشچن جو ہے نا اسی طریقے سے واپس آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ الٹا نہیں پوچھ رہی؟ Is it not the polygamy of the Western woman that you think is liberating her? That's not monogamy, okay? پاکستان کی اور مسلمان عورت جو ہے وہ monogamist ہے. And it's a matter of grace, which is an attribute of leadership, کہ grace آپ کی intact رہے. اس grace کو practice صرف ایک مسلمان عورت ہی کرتی ہے. Okay? That is against the chastity and grace of the woman, that she has multiple partners. This is the grace of a Pakistani and a Muslim woman, that she has only one partner of life. Okay? And this is why Muslim society is a monogamistic society for women, and everywhere else you see every woman is a polygamist. Okay? So coming back to the core of your question, is that helping the Western woman to become more powerful? I'm so sorry. The Western woman is by far in any sort of powerful position. Okay? That is a supposition, a grand supposition, an assumption, a grand assumption. You have to really give me a lot of references. I'm going to have a totally big session. I can probably speak for 2-3 hours on this, on how suppressed the Western woman is. And why is she made to dress the way she dresses, and why is she made to think the way she thinks? اگر آپ کو ویمن لبریشن فرنٹ کے تھوڑی سی آپ نے ڈیٹیل پڑھی ہو, جو کہ میں نے پڑھی ہے, تو میں اس کو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ویمن were liberated for a very core reason, کہ سنگل فیملی یونٹ جو امریکہ میں تھا اس کو توڑنا ضروری ہو گیا تھا, بیکاز امریکن عورت جو تھی وہ ٹیکس نہیں دے رہی تھی. There's a simple constitution of the women liberation movement. انہوں نے پھر سنگل فیملی کو توڑ کر ملٹیپل فیملیز کیے, کہ اتنی بڑی کمیونٹی ہماری 40 to 60% کے بیچ میں بینڈ تھا اس وقت. ٹھیک ہے, ان دا 1830s جب یہ موومنٹ کی گئی کہ عورت کو آزاد کرو کیونکہ یہ ٹیکس نہیں دیتی. اتنی میجر پاپولیشن ہے عورتوں کی اور وہ ٹیکس نہیں دے رہی کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کو انڈیپینڈنٹ کریں گے تو یہ ٹیکس دیں گی, یہ کمائی کریں گی تو ان کو ٹیکس بھی ملے گا. That's how the women liberation movement started. And this is not my words, I'm quoting Rockefeller himself, who started, who's the pioneer and the father of the women liberation front. So you're telling me that they're more powerful? I'm so sorry, they're not powerful by any means, in any way that you can actually scientifically tell me. On the contrary, if anything, they are way more under the influence of the philosophy, which is not theirs, the psychology, which is not on in their control. Okay? So leadership کی basic definition بڑی simple سی ہے. You have to understand what leadership is. Leadership is the science of creating believers of your purpose. تو کیا purpose ہے مجھے بھی بتائیں, جس کی وجہ سے آپ کو وہ لیڈرز لگ رہی ہیں. یا پھر کوئی ایک لیڈر بتا دیں, میں آپ کو اس کو لیڈرشپ کے اسکیلس کے اوپر میجر کر کے آپ کو رپلائی کر دوں گا. اوکے, میں نے آپ کو جو بھی لیڈرز بتائی ہیں, بلقیس سیدھی اور فاطمہ جناح اور all of those women who are doing hardships in Pakistan, اس وہ ماڈل پہ پوری اترتی ہیں. یہ میری اوپینین نہیں ہے, ون لائن اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی لیڈرشپ, یا جو آپ کو پسند آ جائے کوئی ایک چیز لیڈر کی تو لیڈر ہو گیا. لیڈرشپ کا پراپر ایک ماڈل ہے, اس کے کور کے اندر, اس کی باٹم کے اندر مورالٹی ہے, پھر اس کے اوپر ریشنلٹی ہے, پھر سیوک سینس ہے, اور پھر پولیٹیکل سینس ہے. یہ 4 پلرز مل کے لیڈرشپ بناتے ہیں. جس کی مورالٹی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا, اور اگر اس کی ہے مگر اس کو ریشنل تھنکنگ نہیں آتی وہ بھی لیڈر نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں, اس کی سیوک سینس نہیں درست, وہ پھر لیڈرشپ میں فالٹ ہو گئے, اور اگر اس کی یہ تینوں چیزیں درست ہیں مگر اس کی پولیٹیکل سینس ویک ہے تو پھر بھی لیڈر نہیں ہو سکتا. آپ خود میجر کر لیں ان 4 پلرز کے اوپر, پارلیمنٹ ہاؤس میں کون ہے, آپ کی ڈیفینیشن میں کون ہے, دنیا میں کون لیڈرز گزرے ہیں. اوکے, مورالٹی, ریشنلٹی جس کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں, دین سیوکس, اینڈ دین دا پالیٹکس. یہ ہے لیڈرشپ کا بیس ماڈل جو کہ پوری طریقے